evening, everyone. I am Sohan Soren. I am Durkumar Kisku. I am Bhadok Kisku. And we are the Team Alliance, and we will be presenting our PPT, which is based on the case study of Physics Wall. So let's begin with a short introduction. Physics Wall is an edtech platform which offers hundreds of courses for the preparation of exams like JEE, NEET, UPSC, and many other exams through its online app, YouTube courses, and offline centers through two main formats that are Vidyapit centers and Pathshala centers. Vidyapit centers are spread across India in tier 1 cities, and Pathshala centers are spread across India in tier 2 and tier 3 cities. So moving on to the next slide, we'll be talking about the problem statement. So in this PPT, PW is facing a strategic decision to maintain its stronghold in the North India or to expand its territory into South India too. So in the next slide, we'll be talking about the objective analysis. What's the purpose of this PPT? The purpose of this PPT is to evaluate the North versus South expansion strategy, to analyze risk, competition, and opportunities which PW will be facing while applying those strategies, and finally to determine the best growth path for PW according to us. Now we will see the market comparison between North India and South India. In North India, there is a strong brand presence of PW, Hindi medium advantage, and a lower competition intensity in comparison with South India. Existing of offline centers, lower expansion cost. In other hand, we will see in South India, there is already a strong legacy players dominance, regional language dominance, and higher competition and trust of their student and parents, higher shallow cost, and there's a high long-term potential. In the next slide, we will be discussing about the key risks and challenges that PW could face while applying those strategies. So in South, there is strong competition from established players like Byju's, Alliance, Sri Chaitanya's, which PW could find challenging. And second is difficulty adapting to local languages like Malayalam, Kannada, Tamil, etc. And in third strategy, third risk, it is mentioned कि higher customer acquisition cost in new market. मतलब साउथ इंडिया में PW के उतने कोचिंग सेंटर्स नहीं है, तो एडवर्टाइजमेंट में ज़्यादा पैसा खर्च हो सकता है. एंड फोर्थ इट इज मेंशन डिपेंडेंस ऑन स्टार फैकल्टी फॉर ब्रांड वैल्यू. PW का जो पॉपुलरिटी मेंटेन रखने के लिए वो अपने स्टार फैकल्टी पे डिपेंड रहना पड़ सकता है. एंड लास्टली रिस्क ऑफ इनकंसिस्टेंट क्वालिटी अक्रॉस सेंटर, मतलब डिफरेंट सेंटर्स में सेम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ना होने का भी एक डर है. So in the next slide, we'll be discussing about growth strategies for PW. इस slide में हमने 5 different strategies mention करके रखे. So I quickly go through all the 5 strategies. Focus on strengthening North India, gradual expansion into South India. Third is partner with local institutes. Fourth is invest in regional language content. And fifth is adopting to a hybrid model. So in the final slide, we'll be discussing about the recommended strategy for PW according to us. So previous slide में हमने 5 different strategies mention किए हैं, और उनमें से हम एक पिक ना करके 5 का कॉम्बिनेशन पिक करेंगे. दैट इज PW शुड अडॉप्ट अ बैलेंस अप्रोच. और कैसे? बाय नॉर्थ इंडिया में पकड़ बनाए रख के साउथ इंडिया में ग्रेजुअली एक्सपेंड करेंगे. एंड हाउ विल दे डू सो? बाय फॉलोइंग सम स्टेप्स लाइक एक्सपेंड इन साउथ इंडिया थ्रू लोकल पार्टनरशिप. मतलब जो साउथ इंडिया में लोकल कोचिंग सेंटर्स है उनसे पार्टनरशिप करके PW को अपना कोऑपरेटिव बढ़ाना चाहिए और रिकॉग्निशन बिल्ड करना चाहिए अमंग द स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स. एंड सेकंड इज डेवलप रीजनल लैंग्वेज कंटेंट. मतलब PW का जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पे रीजनल लैंग्वेजेस में कंटेंट लाना चाहिए उनको, ताकि स्टूडेंट्स का ट्रस्ट बिल्ड हो, इंटरेस्ट आए और इवेंचुअली दे विल मूव ऑन टू पेड कोर्सेज इन द ऑनलाइन ऐप. और वहाँ पे रिस्पॉन्स अच्छा आया तो देन दे विल मूव ऑन टू ऑफलाइन सेंटर्स. एंड फाइनली यूज अ हाइब्रिड मॉडल फॉर बेटर स्केलेबिलिटी. मतलब उनको ऑफलाइन प्लस ऑफलाइन मोड दोनों में एजुकेशन लाना चाहिए, ताकि जो बच्चे ऑफलाइन अफोर्ड नहीं कर सकते दे विल यूज ऑनलाइन, और जो अफोर्ड कर सकते हैं दे विल यूज ऑफलाइन मोड. सो दिस अकॉर्डिंग टू अस इज द बेस्ट स्ट्रेटजी सूटेड फॉर PW. सो दैट वाज इट फॉर द प्रेजेंटेशन. Okay, firstly, great that you have picked up one specific problem area or one solution instead of trying to talk about all potential solutions. So this is a more focused approach, which is good. Now coming to the questions, at the end you just mentioned that there should be 2 options, online, offline, and whoever finds whichever affordable, they could go for that, right? But if you have a cheaper option,
customers will always choose the cheaper option. So why would someone pay more if it is optional? मतलब कुछ स्टूडेंट्स बिलीव करते हैं कि ऑनलाइन से ज़्यादा ऑफलाइन में ज़्यादा मतलब इंटरेक्शन अच्छा होगा, पढ़ाई भी अच्छी होगी, इन्वायरमेंट होगा। तो कुछ स्टूडेंट्स होते हैं कि ऑफलाइन को ज़्यादा प्रिपेयर करते हैं, दैट वुड देयर टू ऑफलाइन सेंटर्स। And when they are expanding in South, how do you think PW is going to compete with existing players in South? जब वहाँ के जो लोकल कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, Local नहीं, existing players like Alan and Shri Chaitanya, उनसे कैसे compete करेगा PW? मतलब दे कुड कम्पीट लाइक उनको छोड़ के बाकी जो कोचिंग सेंटर्स है, स्कूल्स वगैरह, वहाँ पे मतलब उनसे पार्टनरशिप करके PW अपना रिकॉग्निशन बिल्ड करेगा अमंग पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, और धीरे धीरे मतलब उनका ट्रस्ट बिल्ड होगा कि PW इज़ बेटर दैन दोस कोचिंग सेंटर्स एंड इवेंचुअली दे विल मूव ऑन फ्रॉम दोस कोचिंग सेंटर्स टू PW।